Assalamualaikum. This is the last video for the direct and the indirect narration. इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे which will help you understand how to deal with the direct and the indirect narration. ठीक है, तो सबसे पहले वाला जो सेंटेंस है, he said I am doing my home task now. ठीक है, तो इसका जो वर्जन दूसरा वाला होगा वो होगा she said that she was doing her home task then. अब ये मैं यूजुअली तो जो है ना वो अपने पेज से ही लेके चलूंगी, लेकिन आपने पहली वीडियोस अच्छे से देखनी है ताकि आपको अच्छे तरीके से उसके अंदर जो सेंटेंस की जो डिपिक्शन दी जा रही है ना वो आपको समझ आ जाए ताकि आपके लिए आसान हो। इसी तरह ही सेड दैट आई शुड नेवर डू सच अ थिंग। ठीक है, तो इसका जो इनडायरेक्ट वर्जन होगा वो होगा कि दैट शी सेड दैट शी वुड नेवर डू सच अ थिंग। अगेन रेहाना सेड विल यू स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माय वर्क। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन है तो अब आस्क्ड आ गया। रेहाना आस्क्ड इफ आई वुड स्टॉप इंटरफेयरिंग इन हर वर्क। The teacher said where is my book? Again देखें क्वेश्चन मार्क है तो asked यूज हो गया। The teacher asked the students where that book was, और that भी देखें यूज नहीं हुआ। She said to his sister please say something। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट का एलिमेंट है तो he requested his sister to say something। He said to her I live in this building। ठीक है, he told her, उसने उसको बताया that I live in this building। She said that I do not agree with you। तो इसका जो दूसरा वर्जन होगा वो होगा she said that। अब देखिए she said I do not agree with you। अब आपने इसको कनेक्ट करने के लिए that यूज कर दिया है। she said that she did not agree with me। he said to me do not waste time in idle talk। तो उसने उसको मना किया तो forbade का वर्ड यूज हो गया। he forbade me to waste time and idle talk। he said alas I am ruined now। तो इसको अगर मैं फर्दर थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो ये इस तरह से होगा कि एक्सक्लेमेशन है और थोड़ा दुख का इजहार है। तो ही exclaimed with sorrow that he was ruined then। इसी तरह she said would that my father was alive। ठीक है, अब यहाँ पे wish का एलिमेंट है तो हम इसमें बताएंगे कि that she said that her father had been alive। इसी तरह she said I like clouds in the sky। तो इसका जो इंडायरेक्ट वर्जन होगा वो होगा she said that she liked clouds in the sky। अगेन she said I did not go to school yesterday। तो इसका इंडायरेक्ट वर्जन होगा she said that she had not gone to school the previous day। फर्दर अगर मैं लेके चलूँ तो वो यही है जज said have you anything more to say। तो ये अगेन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर asked use with that the judge asked me if I had anything more to say। इसी तरह he said how well she sings। अब ये उसने थोड़ा सा हैरानी का इजहार किया तो exclaimed with wonder का वर्ड यूज होगा। he exclaimed with wonder that she sang very well। the doctor says the patient is still in the state of coma। the doctor sees that आ गया। अब देखा तो ये थोड़ा सा आपने थोड़ी इन चीजों का ध्यान रखना है। the patient is still in state of coma। Afsha said let us go for a picnic on Friday। Afsha suggested, इस तरह उसने suggestion दी है तो इसका होगा suggested। Afsha suggested that they should go for a picnic on Friday। She said that he rang me at 12 midnight। She said that he had rung her up at the 12 midnight। And the mother said to the daughter please tidy up your room। यहाँ पर request का element है तो requested होगा। The mother requested her daughter to tidy up her room। इस तरह he said to me you are not fast। इसका जो अब इसमें told वाला चीज आ गया तो आपने told भी यूज करना और that भी। He told me that I was not running fast। He said do you have any share in this firm। He asked me if I had any share in that firm। He said she will go there। He said that she would go there। ठीक है, तो आपने जब भी इन सेंटेंसेस को देखना है तो आपने अपने माइंड में सारे के सारे रूल्स रिकॉल करने। This is all for today। Thank you so much।